Welcome dear students in your chemistry class. Today we are going to discuss carbon and its compound, that is the chapter number 4. Dear students, we know that carbon is an element. It is a non-metal. जो हमने previous chapter में chapter number 3 में metal और non-metal में पढ़ा था कि non-metals are the electronegative. But carbon is not an electronegative element. We will study this type of element in the versatile nature of carbon. It is a symbol of C. Atomic number of carbon is 6. And the carbon present in earth crust in 0.02% in the form of carbonates, coal, petroleum and etc. In atmosphere, the carbon is present in 0.03%, example carbon dioxide. Dear students, carbon is present in all the living things in the form of organic compounds, or carbon is also present in LPG, that is liquefied petroleum gas, CNG, compressed natural gas, coal, wood, kerosene, paper, rubber, plastic, leather, dyes, and so many industries are based upon carbon. But the interesting question is, why carbon has so many number of compounds? So the reason is the versatile nature of carbon. Carbon has a versatile nature. In this versatile nature, the very first point is tetravalency. Tetravalent. Carbon is a tetravalent element. It means, dear students, we know that carbon has atomic number of 6. K shall contain 2 electron, L shall contain 4 electron. So for completing its octet and require the electronic configuration of neon, which is an inert element. So the requirement for the carbon, that the neon has an atomic number of 10, it has 2,8 electron. So neon has octet complete. So कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बट कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज द 4 extra electron will not exist in the L shell. The reason is the nucleus of the carbon will not able to handle the 4 extra electron present in the carbon in outermost shell. So carbon will not form C4 negative. So the other option is carbon can lose 4 electron. It can lose 4 electron and form C4 positive ion. But dear students, we know that the center part of the atom is called nucleus, and nucleus contains 2 type of subatomic particle. One is the proton, which have the positive charge, and second one is the neutron, which have the zero charge. And around the nucleus we have some discrete energy levels like the K shell or L shell. And the number of electron present in K shell and L shell are like this. K shell contain 2 electron and L shell contain for carbon 4 electron. And dear students, the force of attraction exists between electron and positively charged nucleus is based upon this formula, that is the Coulomb's law. F is equals to K Q1 Q2 upon R square. If I just consider force and the distance between the electron and the nucleus, then it will come out force is inversely proportional to R square. It means the distance is minimum, then the force will be maximum. So the electrons of the carbon which are present in L shell are tightly bounded with this nucleus, and it will require more energy to lose 4 electron, which is not possible. So here student, carbon यहाँ पर 4 electron lose भी नहीं कर सकता है और carbon 4 electron accept भी नहीं कर सकता है. But carbon has to complete its octet, so carbon will share 4 electron. It will share 4 electron and it forms covalent bond. It forms covalent bond. If I just took an example of methane like this, methane has a formula CH4. It is a hydrocarbon, and carbon, which is a atomic number of 6, 2,4 electron. So it will like this, the electron dot structure for the carbon. And for hydrogen, the hydrogen atomic number is 1. K shall contain 1 electron. So the dot structure for hydrogen will be like this. For hydrogen, the 1
the hydrogen will share carbon one electron, and then like this, all the hydrogen will share one electron from the carbon, and they will complete their the plate. The K shell will have 2 electron. For the carbon, carbon has 4 valence electron और एक valence electron आता है हाइड्रोजन से, and it will share like the single bond. तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं by sharing 1 electron. So through this way we can say that the one carbon atom require 4 electron to achieve the 8 electron gas structure. Therefore the valency of carbon is 4. So that is why the valency of carbon is 4, and that is why it is known as the tetravalent element. That is, carbon is tetravalent. Dear students, tetra means tetravalent. It is a combination of two words. One is tetra, second one is valent. Tetra means 4 and valent means valency. तो जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है उसको हम टेट्रावेलेंट एलिमेंट कहते हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है. दैट इज व्हाई इट इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट. तो वर्सेटाइल नेचर में सबसे पहला रीजन आता है कि कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट. ये दूसरे एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, जिसको हम आगे होमोलॉगस सीरीज में स्टडी करेंगे. एंड द सेकंड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग रीजन इज सेल्फ कॉम्बिनेशन. सेल्फ कॉम्बिनेशन. सेल्फ कॉम्बिनेशन को हम कैटिनेशन भी कहते हैं और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी कहते हैं. इट मींस कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत सारी लॉन्ग चेन भी बना लेता है. इसके अलावा कार्बन दूसरे ही कार्बन एटम के साथ ये ब्रांच चेन भी बना लेता है, लाइक दिस. इट इज एन एग्जांपल ऑफ straight chain. And it is an example of branch chain. और कार्बन कार्बन के साथ क्लोज्ड सर्कुलर रिंग भी बना लेता है, लाइक दिस, क्लोज्ड रिंग. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ कितनी लंबी लंबी चेन्स बना रहा है, कहीं पर ब्रांच चेन बना रहा है, कहीं पर क्लोज रिंग बना रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद itself atom to form long chain, as we can see here. And the property of cell combination of carbon atom to form long chain is useful to us because it gives rise to an extremely very large number of compound, and the compounds of carbons are in number of millions of carbon compound हैं और वो exist कर रहे हैं. The reason is because carbon is tetravalent and it has a property of catenation, that is called self combination. कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ ये डबल बॉन्ड भी बनाता है, और अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, carbon also form some other bonds with another element. The carbon compound also form a strong covalent bond. It forms a strong covalent bond. Why it forms a strong covalent bond? Because the size of carbon atom, because the size of carbon atom is small. And as we have earlier studied in upper topic, the shared electron are tightly bonded with the positively charged nucleus. यहाँ पर strong electrostatic force लगते हैं, तो कार्बन का साइज छोटा होता है. यहाँ पर R की वैल्यू स्मॉल करेंगे तो कार्बन का साइज छोटा होता है. इसकी वजह से कार्बन और इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है. इसलिए कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और यही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आगे जाके लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग ब्रांच चेन, क्लोज रिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं.
So this is a very interesting property of carbon, tetravalency and catenation, due to which we see millions of compounds of carbon. Thank you so much.